Hi, मैं हर्ष छाया and I'm an actor in cinema and television in Bombay. मैं मेरीलिंक आया हूँ. मुझे इनके बारे में पर्सनल रेफरेंसेस से मालूम चला कि डॉक्टर गौरांग कृष्णा एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट और दूसरी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स. ये जो है हेयरलाइन एक नॉर्मल बॉल्डिंग पैटर्न है हमारी फैमिली में. तो वो हेयरलाइन कुछ 8-10 साल पहले उसको हमने बदला था. मतलब पीछे चला गया था, उसको थोड़ा आगे लेकर गया थे. और अब यहाँ क्राउन एरिया में हेयर थिनिंग है. तो अब क्योंकि इन दोनों इस किस्म की सुविधाएं हैं तो मैं चाहता हूँ कि इस थिनिंग को थोड़ा ठीक करा लिया जाए. तो अब डॉक्टर गौरांग कृष्णा एक और प्रोसीजर करेंगे और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये थिनिंग जो है वो बेहतर हो जाएगा. डॉक्टर गौरांग ने मुझे बताया कि अभी तो 10 साल के मुकाबले चीज़ें और आगे बढ़ गई हैं प्रोसीजर में और टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है. तो ये हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया जा सकता है. और जाहिर है कि फिर उन्होंने वो डोनर एरिया चेक करते हैं जो यहाँ सारे बाल रहते हैं. उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ये किया जा सकता है. एंड जाहिर उसके सारी दूसरी जो और डिटेल्स जाननी होती हैं कि आपका कोई मेडिकल इशू है या नहीं है, कोई कांस्टेंट रेगुलर मेडिकेशन है या नहीं है, डायबिटीज़ है या नहीं है, हार्ट पेशेंट है या नहीं है, वगैरह. तो सारी कंसल्टेशन के बाद और ऑफ कोर्स ये सारे इस पूरे प्रोसेस में डॉक्टर गौरांग ही आपसे बात करते हैं. उनको जब तसल्ली हो जाती है कि भाई हाँ ये किया जा सकता है तो फिर वो केस हाथ में लेते हैं. तो मैं पास हो गया हूँ. मेरा केस उन्होंने अपने हाथ में लिया है. I'm really hoping for the best. So all right, sir. So one session of the marathon. जी हाँ. 4.5 hours. 4.5 4 साढ़े 4 घंटे आज कर लिए. But tomorrow also the same hours. We did good because the donor we got decent donor. And कल beard. हाँ नहीं मन करना तो आप ही को, मैं तो लेटे रहता हूँ. ठीक था सर. Everything. नहीं बढ़िया रहा. It was comfortable. कोई दिक्कत नहीं थी. And कल मिलेंगे फिर. कल फिर और 4-4.5 घंटे. 4.5 घंटे कल भी. बिल्कुल. ठीक है सर. थैंक यू. चलिए कल होती मुलाकात. जी सर. थैंक यू सर. सो हाय, कल पहला दिन था प्रोसीजर का और 4-4.5 घंटे काम हुआ. एंड डॉक्टर साहब का कहना है कि काफ़ी अच्छा काम निकल गया कल. आज दूसरा दिन है. रात को ऐसी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं थी. खाली इतना है कि ध्यान रखना है कि आप इस तरह से सोएं कि आपके ग्राफ्स जो हैं डिस्टर्ब ना हो जाएं. तो वो ध्यान रखना पड़ता है. उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है. और आज मैं आया हूँ. आज दूसरा दिन है प्रोसीजर का. तो आज भी मेरा ख्याल कुछ 4-4.5 घंटे लगेंगे. उसके बाद ये 2 दिन का प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा. और दवाइयाँ दे के रखी हैं और कुछ एहतियात बरतने. तो आई होप अब तक तो ऐसी कोई ख़ास दिक्कत हुई नहीं है, आगे भी नहीं होगी.
Hi, I'm Harsh Chaya, and I'm sitting here at the Medilinks clinic. I'm in Dr. Gaurang's office. After about a decade or 10 years, I've come again for a hair transplant operation here, and I'm glad I took the decision. There was a lot of hair thinning in the crown area. I had to use a lot of hair fiber to cover that up. Dr. Gaurang suggested that maybe I could try a procedure once again. Earlier, I had done the front area. The procedure went on absolutely fine. It's done under local anesthesia, so there's no pain actually. It's very comfortable. Even the operation theater atmosphere is pretty relaxed. The doctors are very chatty and they make sure that you're comfortable all throughout the operation. There's Alexa playing music in one corner, so it is not scary at all. It's all very relaxed. It was a marathon process. It went on for 2 days actually, 5 hours on an average each day. Then there's a 2 day rest period. One has to take a few prescribed medications, antibiotics, and all those things. And after 2 days, I've come back here. Today, we have removed all the bandages from here and the back of the donor area. This also was the donor area, but now you can see after 2 days, this portion has healed very well, and even the back part has the back portion of the donor area has healed pretty fine. The grafts are okay. So yeah, I'm happy, and I'm sure the result is going to be absolutely fine. I hope that I will not have to use any more hair fiber. I don't think so. The growth will not be that dense. It will be moderate because he has tried to cover up the whole of crown area. But I'm sure it's going to be much better than what it was before.